Hello, guys. Thank you very much for joining in. Hi, this is Ganesh Naik. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for the FRM and the CFA exam. Now, I have with me one of my students who has been able to clear FRM level 1 in the November 2022 exam. She's going to be talking about her journey, her challenges, and how she has been able to clear the exam. And again, we are doing all of these interviews to make sure that people who are preparing on their own, people who are feeling demotivated, they can get idea of how people have been able to clear, and they also get that same way to clear the exam. With this, let us start the discussion. Shivi, thank you very much for taking out time and talking to us. And first of all, for the audience, when did you start your preparation, and what was your background back then? Okay, so hi everyone, and thank you sir for having me. Um, I have been a working professional for the past 5 years. This is my sixth year running with the same organization. I had prior experience of 4 years in trade forex, and right now I'm a dealer in debt capital markets. Hmm. That is about the work experience. I started my preparation around. I thought of the idea of doing FRM in somewhere in June and July around, and I Okay. started my preparation, matlab proper preparation hardcore in August sometime. Okay, so you joined us in the month of August, 1st August or around that? Around that, in and around that. Okay. Before joining us, you had your own preparation or you directly started with us? No, I had this idea that I'll be able to do it on my own self. And the reason why I joined FRM curriculum is to, one, it will add, of course, to my CV, but mostly to understand, I do not have, even though I'm associated with finance, core finance role, I do not have a degree in MBA. So I actually wanted to study the subject. So I ordered Okay. my GA books and I started with my preparation therein. But the trouble is started in when I realized it took a week's time and I couldn't complete even two chapters out of it. So I reached out to a colleague of mine and he told me that so the thing is FRM is not as easy as it sounds. Okay. And Okay. he told me that 6 months won't be enough for you. You are a working professional and everything, and it's very limited time, even though our work is mostly in market hours. It is something that most of the work we do after market hours also. Hmm. So he told me, seek help. So actually, it was my husband who found out about you. Matlab he searched Acha. and he's the one who does these things in family. So he searched out about you and he took out your contact. He gave it to me and then I reached out to you. So Okay. then I told you the trouble and you guided me that time in ki how I should start with Shwezer. Going in, if I have time, then I should go with GA books. And then it all started there and then. Okay. Okay. Because I don't recommend GAR books to anybody. Because like you said, Ha. it's too time consuming. And for working professional, it is not possible to complete it in 6, 7 months. Also, like I said, na, कि if you feel trouble in some chapter, then you go to GARP. I know it is not going to happen. In the sense, you'll not have the time to go back to GARP because Swagger itself will take a lot of time of your consumption. So then you started by July end or August, you started with us and you started with video lectures. So Yes. what was the flow? Did you follow the Excel sheet that we had provided the tracker or how was it? No, I strictly starting on at least, I strictly followed the Excel sheet. So I joined somewhere, then you had already done 10 lectures or something. Mm-hmm. So from that point on, I missed on the 10 lectures, but I started on the 11th. So I went with the Acha. flow. I used to see the video lecture myself. Hmm. And then I used to, mine was a weekend batch. So Hmm. then on the weekend, I used to study the same chapter with you on Hmm. and then try to give the mock. So I try to follow the pattern therein. So at Acha. the Okay. start of it, it was as guided and as recommended, to put in the hours. But in going on no, in between, I lost the flow of it. Sometimes I lost not doing a mock. Sometimes I were able to attend the video lecture, but not able to see the before class preparation. I were not able to do.
So no, Hmm. something or the other was lacking in between. But to answer your question, yeah, well, I stayed true to the, to the best of my capacity to the Excel provided. Okay, and how much time you were studying every single day when you started? Uh, so sir, here it is to understand this fact. Here comes the trouble. So you see the video, like you try to see the video lecture, then you try to attend the live class also. But ultimately, you have to study yourself also. So that is also a time you take, right? Hmm. So I यहीं पे सारा डिसबैलेंस एक्चुअली क्रिएट हुआ था ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ठीक है so Okay, I tried to study 2.5 to 3 hours a day but some days it was like कि मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाई got it. मतलब केम आउट ऑफ ऑफिस 11 o'clock सब एवरीथिंग एंडेड तो फिर 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाई और मेरा फ्लो भी नहीं था पढ़ाई का उतना मतलब द कंसंट्रेशन आई हैड टू बिल्ड इनिशियली जस्ट टू कंसंट्रेट टू बी एबल टू सिट एंड स्टडी आई कैन मतलब इन Got it. ऑफिस sit and read research reports but to study actual numbers that is something different Got it. Got तो it. इसमें आई कैन नॉट गिव यू अ करेक्ट आंसर कि कितना So बड़ा बर्डन है consistency was not there. Explicit consistency ये was not there. But हाँ then, so you were able, like you said, there was a flow, there was a mismatch in the flow sometime in between. या Okay. So after how many chapters, or if you could give us a brief when that happened, and was there a तो loss of motivation during that period of time? so the initial up till I guess 25th or 30th of the chapter it was going okay. I were able to go with the mocks and everything, but some time in between, due to personal reasons and also some things that were going in Hmm. alongside the job and everything, I lost the touch in somewhere in September, end of the September side. So there 15 days I lost. Hmm. उसके बाद I just it hit me मतलब you know I have not given mocks मैंने वीडियो लेक्चर्स कर लिए पर मैंने मॉक्स नहीं दिए ठीक है तो Hmm. इवन दो आई स्टडीड द चैप्टर मैंने उसका वीडियो लेक्चर भी कर लिया और मैंने आपका लाइव सेशन भी कर लिया पर मैंने उसका मॉक नहीं दिया ठीक है तो आई मतलब मेरे का बैकलॉग क्रिएट होता गया so that Hmm. time September and somewhere it hit me and I remember I reached out to you and you said to me you started really early on how is this problem even there एक्चुअली तब मैं डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़ा था और मैं जा रहा था। मैं फिर बोला कि अच्छा अभी कॉल खत्म होगा तो मैं जाऊंगा, बट वो चल रहा ओके था कॉल। तो फिर मैं उनको एक्सप्लिसिटली याद है हमारा कॉन्वर्जेशन। बट हाँ, डेफिनेटली हाँ हाँ मुझे मेरा मेरा कंसर्न ये था कि क्या हुआ, मतलब इतना मिस क्यों हो गया, और मिस हो हाँ गया तो आप पहले रीच करते तो हम लोग थोड़ा और उसको ये कर सकते थे। बट तभी भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, मतलब तभी मैंने आपको ये बोला था कि आप अभी भी कर सकते हो। आप जस्ट ये पैटर्न फॉलो करो, इसको खत्म करो, यू विल बी एबल टू डू इट। ये मेरे हिसाब नहीं से दैट सितंबर एंड ना, ऐसे ही ये कुछ हुआ था। सितंबर है राइट राइट हाँ हाँ। सितंबर हो गया था अक्टूबर रीच हो रहा था नवंबर में एग्जाम था एंड आई हैड नॉट इवन कंप्लीटेड द 30th का मार्क पूरा एंड बाय दैट टाइम आई थॉट कि सितंबर एंड नहीं था एक्चुअली शायद सितंबर हाँ या सितंबर एंड था सो बाय दैट टाइम आई थॉट कि मैं अपना ना मोस्ट ऑफ द कोर्स फिनिश कर लूंगी बिकॉज अक्टूबर वाज स्ट्रिक्टली टू बी केप्ट फॉर रिवीजन पर्पसेस ओनली हम्म। so actually, my brother was getting married in then point, and a lot of travel was put into, and lot of office things, मतलब everything kept piling up alongside. तो ओके, फिर वो कैसे सब किया चीजें फिर? चल रही आफ्टर दैट कैसे किया, मतलब फ्रॉम द 1st of October कैसे हुआ? so you cut down some chapters. That time we explicitly talk कि how to go about it now. ठीक है यू टोल्ड मी कि जितने किए हैं उनके मॉक्स यू गिव ठीक है यू गिव देम अलोंग साइड एंड स्टार्ट कवरिंग अप व्हाट ऑल इज लॉस्ट जो चैप्टर्स नॉट इम्पोर्टेंट थे लाइक कॉन्स में यू टोल्ड मी स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी यू कैन लीव बिहाइंड कवर द रेस्ट सो आई स्टार्टेड दैट ऑन और वहां से ना एक्चुअली आई मतलब फुल थ्रॉटल में आई वेंट and ओके। I used to put in like 6 hours, 7 hours, whatever time it takes on the weekends. I used to go to the library morning till evening, whatever time it took. मतलब तब तो मुझे टाइम पता भी नहीं होता था. Now you should ask me कितने घंटे पढ़ा because I ओके। used to go morning 9 and sometimes in evening I used to come back. तो वहाँ वाह। पे I put in a like so वहाँ पे cover किया था.
तो आपका lot फुल of chapters of yours. मतलब ऑन एन एवरेज कितना पढ़ के हो गए? 60 में से कितने हुए? So 60 में से I think I covered 55 at least वो प्रॉपर हुए थे विद सॉल्विंग ऑफ द चैप्टर? with proper of the solving of chapters with वाह, mocks. ओके। सो मतलब अराउंड 25 चैप्टर्स विद सॉल्विंग आपने कंप्लीट किया, और जो पिछले सॉल्विंग पेंडिंग थे इन दैट अक्टूबर मंथ? In by October 20th I guess वाह, somewhere there. ओके। Because तो रिवीजन के लिए भी तो टाइम चाहिए था। फिर क्या हुआ आफ्टर 20th ऑफ अक्टूबर? क्या हुआ? तब उसके बाद डबल पैनिक आया बिकॉज नाउ व्हेन आई वेंट टू रिवीजन मोड आई रियलाइज मैं भूल गई सब। भूल गई हूँ? हाँ, आई रीच आउट टू फिर यू अगेन, यू टोल्ड मी ये सबके साथ होता है। तो ये सब तो नॉर्मल है, मैं भी पढ़ूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, मुझे भी याद नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 60 चैप्टर्स है और सब चैप्टर में अलग 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 कॉन्सेप्ट्स है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। तब यू हैव फिर टू आपने रियलाइज स्टार्ट दिस। किया? नहीं, this is हाँ। not something that I do not study on a day-to-day basis. Bond is my core expertise. Still, it was a subject to me. मतलब this is not the way I do it in office. हम्म। Derivatives is a desk that sits behind me. So, मतलब this is what I hear day-to-day basis. Still, that was a chapter to me. मतलब it was मतलब challenging to me. गॉट That इट। was the thing. फिर उसको कैसे So you टैकल किया? have to रिवीजन स्टार्ट किया? हाँ, you have to perceive it in a as a student basis. ठीक है, मतलब if you हम्म। want to clear the FRM, not as a professional basis, I would say. मतलब that helps, but so I realized my number one mistake that time on, and it was too late for it. I did not make notes throughout our हम्म। video lectures and our live sessions. I used to just scribble around because एक तो वो आदत चली जाती है ना स्टूडेंट्स हम्म। की, वो वाली आदत चली गई, and I used to think कि श्वेजर इज नोट्स ओनली। ठीक है, तो हाँ। तो उसी के साइड में मैं लिखती गई करती गई लिखती गई करती गई। देन आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। आप रियलाइज करोगे रिवीजन में? अक्टूबर के, हाँ अक्टूबर के 20th में आई ओके। एम सिटिंग एंड आई स्टार्टेड टू मेक नोट्स। ठीक है, एंड नाउ आई हैव अ फुल फ्लेजेड इतनी मोटी रजिस्टर विद नोट्स एंड एवरीथिंग प्रॉपर विद मी। बट दैट वाज पैनिक पार्ट 2। ठीक है, सो इट वाज टेकिंग टाइम, रिवीजन में भी बहुत टाइम लग रहा था। आई डोंट थिंक सो कि मैंने नवंबर में माय एग्जाम वाज, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। सर 18 तक चले थे ना, मेरा शायद 11 को था 18th या मिड में मैं। 19 था शायद, 19 था शायद जहाँ हाँ, तक। तो मेरा मेरा शायद 11th या 12th को शेड्यूल था एग्जाम। ओके, तो मॉक्स ठीक है, दिए फिर फुल रिवीजन के बाद? आई रीच्ड आउट टू यू जस्ट बिफोर मॉक्स। मैं शायद 5 तारीख तक फ्री हुई थी एंड आई हैड टू गिव 4 मॉक्स। मतलब सेकेंड वीक में मेरा जब एग्जाम था उससे जस्ट 2-4 दिन पहले। सो 11th को अगर एग्जाम है तो आई गॉट फ्री बाय सेकेंड और थर्ड। थर्ड तक हम्म। मैंने सारा रिवीजन कंप्लीट किया और वहां से मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया था। सो यू कितने आस्क्ड मी दिए? टू गिव, आई सैट फॉर 3 मॉक्स, मतलब 2 मॉक 3 मॉक्स प्रॉपरली, एंड 1 मॉक वाज लाइक जो पहला वाला मॉक था ना, वो मैंने बस तब मैंने क्या है ना, ताकि मैं अपना रिवीजन के टाइम ही मैंने स्टार्ट कर दिया था कि उसके क्वेश्चन के आंसर क्या है, क्वेश्चन के आंसर के, हाँ वो हाँ मैंने हाँ। उसका सीधे पीडीएफ से स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो वो मैंने रिवीजन के टाइम भी स्टार्ट कर दिया था कि बिकॉज मुझे चैप्टर वाइज रिकॉल जनरेट करना स्टार्ट करना था, तो वो मैंने हम्म। तब स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब बाकी फर्स्ट थ्री मॉक मॉक्स वाज आई नॉट अ प्रॉपर मॉक, आपने वैसा नहीं दिया, यू जस्ट वेंट टू नहीं, द क्वेश्चंस, देन सेकंड मॉक? ये second mock I gave properly, full sitting. I think I scored like what 55 or something on that. ओके, Really उसमें भी टेंशन demotivated था, again. उसमें भी टेंशन था कि क्या होगा कि कैसा So the पास होंगे कि psyche नहीं। is, नहीं the psyche was है कि मेरी स्टार्टिंग से psyche थी कि मैं श्वेदर कर लूंगी, मैं गार भी कर लूंगी, फिर मैं बीटी भी कर लूंगी, मतलब मैं ये सब कर लूंगी। यू अंडरस्टैंडिंग? और मैं अभी बैठी हूँ और मेरे पास मॉक्स तक देने का टाइम नहीं है। ठीक है, होता है, तो होता है। हाँ, तो मेरे को लग रहा था मैं सब कर लूंगी, और मेरे को लग रहा था मैं मॉक्स भी दे नहीं पा रही हूँ। तो और मॉक्स भी जब मैं दे रही हूँ तो उसमें यू वर टेलिंग अस कि अगर 17 अबव आ रहे हैं तो समझो दैट लाइक इट्स अ गुड गेम फॉर यू एट द मोमेंट। 55 आ रहे हैं, 55 इज द कट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट इन एफआरएम, और हम्म। इसका लेवल और उसका लेवल इज टू हम्म। कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। यस। मतलब नाउ दैट आई नो इट, तो उसमें 55 आ रहे थे। So again reached out to you. You told me मतलब to stick to basics. There are other things which people should know. श्वेजर के पीछे सारे फॉर्मूलेस दिए होते हैं।
कीप नोटिंग डाउन देयर, वहां पे जो जो आप पढ़ रहे हो उसी के साथ आप नोट कर सकते हो, मेक्स योर लाइफ इजियर। ठीक है, ये बराबर। सारी चीजें मुझे लास्ट के 10 दिन में पता चल रही थी। वैल्यूएशन की बुक के लास्ट में सारे नोट्स दिए होते हैं, सो उसको यू कैन डेली रिवाइज। ठीक है, ये सब चीजें मुझे ओके। स्टार्टिंग में पता चल जानी चाहिए थी। ठीक है, तो वैल्यूएशन की बुक के लास्ट में नोट्स दिए रहते हैं, वहीं पे यू कैन स्क्रिबल डाउन, और एटलीस्ट वो चीज यू कैन गो बाय ऑन अ डेली बेसिस। गॉट इट। सो दीज स्मॉल थिंग्स आई स्टार्टेड डूइंग ऑन लास्ट 10 days, गॉट इट। because तब ओके। there is a annexure that comes at the end of the book. हाँ हाँ। ओके, आप उस पे वो आपको कीवर्ड्स देते हैं, सो जस्ट टू इंक्रीज योर रिकॉल व्हाट यू कैन डू, मतलब लाइक वी यूज टू डू फॉर वोकेबुलरी, इन मिडिल स्कूल और समथिंग, जैसे हमारे पास क्यू हम्म। कार्ड्स होते हैं, यूज इट लाइक दैट। आप देखो कौन सा, मतलब यू अंडरस्टैंड, अगर उसमें दिया हुआ है वैल्यूएशन तो फिर कहाँ कहाँ दिया है, बिकॉज उसमें पेज नंबर भी दिया होता है, यू कैन गो बैक टू द राइट। पेज एंड कि सो आपको दीज याद थिंग्स। है क्या वो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली? एग्जैक्टली, सो लाइक ब्लैक एंड शोल्स दिया है, आप जाओ, उसमें पेज नंबर दिया होगा, हाईलाइट रहेगा कि किस किस चैप्टर में कहाँ का है, यू कैन गो बैक। सो यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, बिकॉज अगर गॉट इट। मतलब इट इज वेरी स्मॉल थिंग्स टू डू, बट हम्म। दिस इज समथिंग यू कैन डू इन द लास्ट मंथ। आई डिड गॉट इन इट। लास्ट 10 days because I realized it in last 10 days. पर तुमने अभी थर्ड मॉक भी दिया था, यू हैड गिवन थर्ड मॉक, उसमें क्या स्कोर था? तो और उसमें मेरा 70 था। वाओ। हाँ, लेकिन उसमें भी कैश था, सो उसमें मेरा हाँ। शायद मेरा नेट चला गया था। ठीक है, ओके। आई गेस 65 या नहीं 70 अराउंड ऐसे कुछ था। ठीक है, तो बट आई रियलाइज मैं मॉक देने के, मैं ना थोड़ी टेंशन ज्यादा लेती हूँ, आई एम अ बिट ऑफ परफेक्शनिस्ट, मतलब बड़ाई नहीं कर रही। सो जब एग्जाम में क्वेश्चंस गलत होते हैं या कुछ होता है ना, तो आई लूज माई मतलब आई गो टू पैनिक गॉट इससे। इट। समझा। तो व्हेन आई वेंट टू सी द मॉक अगेन, आई रियलाइज कि मुझे ये आंसर भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था। ओके। ठीक है, तो मतलब आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर, बट जस्ट बिकॉज आई एम अ पैनिक स्ट्रिकन काइंड ऑफ एन एंग्शियस पर्सन, सो आई लॉस्ट माई कूल इन बिटवीन। सो मॉक में ना मुझे ये रियलाइज हुआ कि एग्जाम में भी यही होगा, गॉट इट। कूल रखना है, मतलब किसी तरह कूल रखना है, इट wasn't ओके। about the और question. अभी एग्जाम के दिन क्या हुआ, फर्स्ट 1 आवर जब स्टार्ट किया सॉल्विंग? So I gave my mocks in the time, this time मैंने अपना एग्जाम देना था, so I ओके। had a morning session, I used to go for my mocks in the morning only. बराबर। सुबह तो मैच हो जाता था सिंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट इन द एग्जाम आई रियलाइज्ड दैट मॉक्स यहाँ पे थे और एग्जाम यहाँ पे था, फिर मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत वाइज चेक करती है, यस। बहुत चेकर है, मतलब क्वांट्स यू डू नॉट रियलाइज दिस इज क्वांट्स, even though it takes solving, but this has so many concepts to it. एक क्वेश्चन में दे आर आस्किंग 3-4 थिंग्स। ठीक है, तो वो तो मेरे को लेवल ऑफ एग्जाम फर्स्ट 1 hour में सेट हो गया था, तो फर्स्ट 1 hour तो वेंट इन पैनिक टू हुआ? से, बिल्कुल हुआ। ओके। पैनिक हुआ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सब कुछ हुआ। फिर? So first 1 hour went into saying कि चलो ओके। try to solve and I could see through the time कि quants में time ज्यादा लग रहा है, and quant was something that I had given the most time to prepare. I got 4 in that. Quant was something I ऐसे ही होता है, वट एवर वी but प्लान वो नहीं होता है, ऐसा ही है। यू हैव टू बी रेडी फॉर अनसर्टनिटी। बट हाँ, अभी हाँ, बाकी का क्या हुआ, कॉन्ट को छोड़ के बाकी बुक्स में क्या चला? नहीं सब, सो मेरे को लग रहा था कि मैं, सो यू डू नॉट नो व्हेन इट इज कॉन्सेप्चुअल, यू डू नॉट नो इट्स राइट और रॉन्ग, यू आर डूइंग इट। 3 मतलब आउट ऑफ 4, 2 बिल्कुल अलाइक ऑप्शंस, सो यू गो विद द गट फीलिंग और द इंटेलिजेंट गेस काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई डिड नॉट नो एग्जैक्टली दैट कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, बट आई स्टिल आई ट्राई टू मेंटेन माय काम एंड गो थ्रू इट। मतलब आउट ऑफ गॉट द इट। 4 books, वन वाज द फर्स्ट वाज द बुक दैट आई literally मतलब went by it the least, मतलब the गॉट least इट। time I could devote to it, because I had limited time, not because I had a issue with intention, and I got 1 in it. वाओ। Okay, so ओके। but काफी हेल्प हुई थी उसमें, because we remember हमसे पहले कुछ लोगों का एग्जाम हो चुका था, they were giving feedbacks.
they keep हाँ। giving you feedbacks and they were pointing out कि ERM बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है, रिस्क उसका कल्चर। सर रिस्क कल्चर बहुत पूछा जा रहा है। तो व्हाट हैपेंड, लास्ट में जब 10 days आई वर डूइंग इट, तो अलोंग साइड माय रिवीजन एंड मेकिंग नोट्स एंड ऑल दीज थिंग्स आई वर टेकिंग अ नोट ऑफ। और उस चैप्टर का मैंने जाकर के वापस से मॉक दिए, जो पॉइंट वो नोट आउट कर रहे थे ना, उन चैप्टर्स के मैंने वापस से जाकर के मॉक दिए। मॉक मतलब चैप्टर वाइज मॉक दिए, क्योंकि समझा। आपको कई चीजों में ना कई चैप्टर्स में एक मॉक दो मॉक अवेलेबल होते हैं। मैंने रियलाइज किया इनमें तीन तीन मॉक्स भी अवेलेबल थे साइट पे। तो मैंने उनके तीनों मॉक्स दिए, जिसका मॉक नहीं दे पाए उसका PDF देखा, जो स्टूडेंट्स ने हाईलाइट कर दिया। आई समझा। अंडरस्टैंड कि मैं ऑलरेडी डिस्पैरिटी पे हूँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट स्टेज पे एग्जाम शेड्यूल किया है, तो मेरी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा होगी, विच हम्म। यू योरसेल्फ मेड क्लियर एट द स्टार्ट ऑफ इट। लेकिन एटलीस्ट मेरा एडवांटेज ये था दैट स्टूडेंट्स वर हाईलाइटिंग आउट इन योर ग्रुप कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, एंड वो बहुत ही रिपीटेटिव था। मतलब दे वर रिपीटिंग की यही चीज है, बस वही कॉन्सेप्ट्स। आई फील लाइक कि वही उन्होंने उनका लेवल लाइक एटलीस्ट 3-4 टाइम्स हाई कर दिया उन्होंने। समझा तो समझा। और वो, लेकिन वो आपको हेल्प कर गया, आपने रिवीजन कर लिया था उसका, कॉन्सेप्ट का। रिवीजन के साथ कोर रिवीजन कर लिया, मतलब वो कॉन्सेप्ट आई डिडंट लीव। मतलब आई मेड अ नोट ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स कि ये हम्म। कॉन्सेप्ट्स थे, एंड यूज्ड टू लाइक कट देम डेली ऑन अ डेली बेसिस कि ये कॉन्सेप्ट हो गए। आप मेरे घर आओगे ना, तो फिर देयर इज अ मिरर, कबर्ड एवरीवेयर, चौक से या वाह। उससे ओके। मार्कर से चीजें स्क्रिबल्ड है, अभी तक स्क्रिबल्ड है। तो मतलब वाह। मैंने नोट कर लिया था कि ये चीजें हैं, और फिर मैंने उसे क्रॉस किया। नाउ दैट आई गॉट एम इट। टॉकिंग टू, आई रियलाइज मैंने पढ़ाई की थी। लेकिन फिर जब एग्जाम क्वांट में कैसा गया, क्वांट सॉल्व हो रहा था एग्जाम में? में से एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग इन वन ऑप्शन, दे आर नॉट आस्किंग अ सिंपल कि आप एक चीज सॉल्व करके दो, दे वर आस्किंग 2-3 हम्म। थिंग्स टू सॉल्व। अब एक भी चीज सॉल्व नहीं हो रही थी ना, या एक भी क्वेश्चन गलत आ रहा था, तो ऑप्शंस वर फॉर्मुलेटेड इन अ वे दैट दे वांट यू टू गिव द करेक्ट एग्जैक्ट आंसर, सो यू हैव हम्म। टू सॉल्व ऑल द 3 थिंग्स। इट्स नॉट लाइक आप कुछ भी कर सकते हो। सो इन कॉन्ट्स, एंड द क्वेश्चन वाज सच दैट इट वाज टाइम टेकिंग। सो अगर आपने एक बार में सॉल्व नहीं किया ना, यू हैव टू गो बैक अगेन, एंड दैट वुड टेक double the मोर time टाइम and बेसिकली, double हाँ। the panic. So I started leaving quants question. मतलब जहां ओके। जहां वन गो में सॉल्व हो रहा था, आई वर डूइंग इट। नहीं हो रहा तो देन छोड़ दिया, ओके। हाँ, द पॉजिटिव थिंग इज दे डू नॉट डू अ नेगेटिव मार्किंग। तो दैट यस। टाइम ऑन आई यूज टू मार्क द क्वेश्चन, मार्क द ऑप्शन इटसेल्फ, एंड मूव अहेड, बिकॉज आई रियलाइज मेरे पास शायद वापस जाने का टाइम भी नहीं होगा। और लास्ट गॉट के इट। 15 मिनट्स में तो मेरा इंटेंशन भी नहीं था, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं तो फेल हो गई हूँ। सो टोटल सारे क्वेश्चन प्रॉपरली किए थे, कुछ छोड़ा था? तो कॉन्ट्स कॉन्ट्स को छोड़ करके आई डिड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली। मतलब ओके। बिकॉज मैं रियलाइज कर रही थी यहाँ पे कि ये मैं लैग कर रही हूँ, ये इट इज टाइम टेकिंग। ठीक है, वो एक तरह से मेरा एंथू नहीं चला गया था, बट मेरा वो, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग से समझ गए। पैनिक स्टेट एंड ऑल जाता है। तो मैं सोच रही थी कि जो मैं कर पा रही हूँ, लेट मी कंसंट्रेट देयर। तो बट 20 में मैंने से कॉन्ट्स कितने को भी हुए रहेंगे आपके हिसाब से कि ये प्रॉपर हुए होंगे? 20 में से कॉन्ट? दे शुड गिव दैट, मतलब दे शुड गिव दैट नहीं आंसर, नहीं रे। दे डोंट। हाँ, आपको क्या लग रहा था कि कितने हुए हैं राइट, कॉन्ट के बुक में? कॉन्ट की बुक में, सर कॉन्ट में तो आई गॉट फोर्थ क्वार्टाइल। तो भी तो 5, 10, 7, क्या आपको क्या लग रहा, कुछ नंबर था दिमाग में? मोर देन दैट तो हुए होंगे, बिकॉज मैंने सॉल्व तो सारे क्वेश्चंस किए थे। ओके। और ओवरऑल जब एग्जाम के बाद निकले तो कितने क्वेश्चंस आपको लगा कि मेरे राइट होंगे? आई थॉट दैट मैंने वो जो 55 का मार्क है ना, मैं उसके हम्म। आसपास का ही आई हूँ। बट ओके। आई जज माई सेल्फ अ लॉट, तो मेरे को लगता है अब इससे ज्यादा ही आ गए होंगे मे बी। ओके, क्या क्वार्टाइल्स क्या है अभी एग्जाम में? 1, 4 and 2, 2। 1422, सो बुक वन बहुत जबरदस्त, वो पॉइंटर्स जो टेलीग्राम ग्रुप था उसकी भी वजह से थोड़ा हेल्प हो गया। 3 और 4 पहले से अच्छा जा रहा था पढ़ाई में कि? हाँ सर, मतलब मेरा, मैंने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा था, बिकॉज जब पहले से ही पता चल गया था एग्जाम हम्म। कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, और हम्म। फीडबैक भी मिला
मतलब कई बार ये फीडबैक मिला कि इसी चीज का दूसरा फॉर्मूला भी है उसी बुक में विच वी आर मिसिंग आउट, मतलब श्वेजर जो इतना कंसाइज करता है कंटेंट को, उसमें भी हम मिस आउट करते हैं। हाँ, बट वो एक आध फॉर्मूले से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पैनिक उससे कुछ होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं सर, मेरा। बट व्हेन एग्जाम का लेवल भर जाता है ना हमारे टाइम पे, तो वही हम्म। फॉर्मूला पूछते हैं जो आप मिस आउट करने वाले हो। हाँ, बट वो ओके। मुझे फीडबैक ओके। ही मिल गया था, वो मुझे ग्रुप से या स्टूडेंट से टच में रह के फीडबैक मिल गया था। बट वो तो टेलीग्राम ग्रुप एक्चुअली बहुत लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ज्वाइन भी करते हैं, फिर वो लोग बात नहीं करते। जैसे एग्जाम आता है सबको इसका इम्पोर्टेंस समझ में चालू हो जाता है कि क्या है मतलब टेलीग्राम ग्रुप, क्यों हम इतना तो उस पे ये कर रहे थे। हमारा क्या था, दो तीन स्टूडेंट्स का कनेक्ट भी बन गया था। तो व्हाट, वी हैड अ सब ग्रुप टू द टेलीग्राम ग्रुप। सो मालूम है, वो वी हर बार यूज्ड टू बनता आस्क, है। हाँ, सो वी यूज्ड टू आस्क बोथ वेज। तो वहाँ समझे। टेलीग्राम पे लाइव रहते थे हम लोग। सो अभी कोई, सो डेली वहाँ क्विज भी होती थी, ठीक है। हम्म, सो मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट दैट बराबर। हेल्प यू स्टे इन टच विथ थिंग्स, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गॉट इट। मतलब consistency, which I did not had, but I'm saying it still. Consistency, staying in touch with things. Don't take these things lightly कि आज क्विज हो रही है ना तो उसका आंसर नहीं आता है. We should know it because that tells you कि either you are behind the curve or ahead the curve. गॉट इट। गॉट इट। अभी विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन फॉर लेवल 1, इफ यू कुड गिव 3 टिप्स टू स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर नाउ, आपके हिसाब I think I've already given, मतलब through our से समराइज conversation, कर दो, दैट्स ओके। make notes from day one. Make notes, ठीक है. ओके। You do not need to, मतलब if you are short on time, you do not need to attend the video lecture and the live lecture both. ठीक है. Just make sure that whichever you attend, do it properly, and उसके just बाद concentrate on your own study and do the mock. मतलब do not ओके। underestimate the power of time. After it goes now, then uh, things start going south. ठीक है. So one was that, two was that your Shwether is a like really good power. मतलब it has summarized things at the back of the book also. So when we are making notes, no, जब जो कोई भी फॉर्मूले आते हैं, just start taking those उन्हीं फॉर्मूला सेक्शन में you start, because सारे फॉर्मूले उतना दिए नहीं होते हैं. So start बराबर। adding those formulas in that time. Annexure, as I spoke of, you can go to the annexure and वहां से you can just going, मतलब रात को सोने से पहले or somewhere through the day, whichever you think is the sharpest hour for the day you are, just pick out as a vocab की ये वाला concept, go back to the concept, concentrate on the बराबर। this helps you recall the concept. You asked for 3 tips, so I guess I'm out of 3. Okay, wonderful, wonderful. And now when the results are out, what has been the reaction of people around you, family, friends, office people? फैमिली फ्रेंड्स, मतलब मैंने तो बोल ही दिया था कि आई, यू ऑल्सो नो कि मैंने आपको आते ही बोल दिया था कि मैं नहीं पास Really? होने वाली. यू इवन सजेस्टेड मी, गाइडेड मी, स्टार्ट विद द गा बुक नाउ. तो बट मेरा वो रहता है कि ना, ये मैंने बहुत देखा हुआ है कि एग्जाम, बिकॉज इट इज थियोरेटिकल ना, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्या मैंने जो राइट किया है वो राइट है क्या। तो इससे ऑब्वियसली जनरली कॉन्फिडेंस नीचे ही होता है लोगों का, तो इसमें कोई गलत नहीं है, और लेकिन पास होते हैं लोग। आपको जैसे फोर्थ क्वार्टाइल आया इन बुक 2, अगर आप किसी को बोलोगे अगर मेरा कितना कम आया फिर भी मैं पास हो गई, नॉर्मली न्यू पीपल विल नॉट रियलाइज, दे विल फील कि नहीं होता है आइडली। बट आप हो गए हाँ, बिकॉज आपका बुक 3 बुक 4 बहुत अच्छा था, दैट रियली हेल्प्ड यू इन योर प्रिपरेशन। तो हाँ मतलब वंडरफुल। हाँ, बोलो बोलो। नहीं यार, yeah, मतलब it is, if you're an anxious person, there are different kind of personalities. Maintain your cool through the exam. Try not to book the exam at the end because the difficulty level rises. You will tell your students, I know that already, but because the difficulty level rises, try to give the exam in the first few days only. So you asked for the reaction, so it was like really positive. I remember the day before on the group you were saying कि exam का आने वाला है, but I had imbibed the feeling already कि I just do the formality, go there and check and see field, ठीक है. But morning में आया, मतलब रात को आ गया था, but मैंने morning में check किया, like early morning, and I'm like, I told my husband, he didn't, मतलब he brought the laptop. I said,
it is saying past. I don't know how come it is saying past, but it is saying past. तो मैंने कहा very long an idea क्या मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. We were like really surprised. Was it मतलब happily surprised. My mother was also there through this time with me in Bombay, so it Wow. was a really really good feeling when you don't anticipate it, no. So it Yes. is like really good that Wonderful, time when. wonderful. But I'm very happy. The best part, I think, so of the journey was that okay, there was a low point and you picked up yourself, you gave your best shot. And that is how actually, that is what actually helped you. If you would have quit, defer कर दिया होता, तो ये दिन नहीं होता आज, definitely. So, फिर डिफर वो, मैंने नहीं किया बिकॉज स्टार्टिंग से ना यू वर डिमोटिवेटिंग टू डिफर. हाँ मैं बोल ही दे रहा था, वर कुछ फ्रेंड्स फायदा विद नहीं मी. होता है. They were friends with me who filled the exam alongside me and they deferred the exam. Okay, and it made all sense at that point in time to defer the exam. But say it, I didn't want to disappoint you or anything like that. But that was the reason I didn't defer the exam. It made all the sense to me at that point कि मैं defer करूँ. सिचुएशन वैसा था, Also, आपका 30 चैप्टर्स ही हुआ था, and all of it. हाँ, But now when your friends will see कि आप निकल गए हो, so अब उनको लगेगा कि मैंने दे देना चाहिए था. ये हमेशा तो होता है. मैं डिफरिंग कभी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज एक जैसे आप डिफर करते हो ना, मोमेंटम पूरा लॉस हो जाता है. जो आपने 30 पढ़ा था ना, सब जीरो. क्यों? क्योंकि आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा उसको, फिर से टाइम देना ही पड़ेगा, आप भूल जाओगे. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव डेफिनेटली योर, वो जो आपने डिसीजन लिया था, दैट इज हेल्प्ड यू. योर लास्ट 20-25 days, 1 month प्रिपरेशन फ्रॉम 1st of October जो आपने डाला, दैट रियली हेल्प्ड यू. सो एंड आई एम वेरी प्राउड कि आप निकल गए. क्वार्टाइल्स वर रियली गुड. अगर आप बुक 4 को भी छोड़ो ना, तो इट्स 1-2 इज वेरी गुड क्वार्टाइल. सो वंडरफुल. And I'm very happy, and I'm sure this interview is going to be very helpful for all the other students who feel demotivated during their journey. Okay, to go ahead and give the exam, they will clear the exam. So thank you very much for taking out time and talking to us. And this is going to be really anything. interesting interview. Thank नहीं, you. thank you also. मतलब it is not it doesn't go unnoticed to whoever joins the class, that you really put in the other side of it. Studying and everything is one. The curriculum is designed in a way, I told you in the message also, that we had to just imbibe it, because really time भी उसी का रह जाता है कि Hmm. कोई पूरा खोल करके दे दे, and you just have to imbibe it. So you have done that, and apart from that मेरे उसमें तो आपने जो मोटिवेशन प्रोवाइड किया, बिकॉज आई यूज्ड टू कॉल ओनली व्हेन आई वर डिमोटिवेटेड, लॉस्ट होप. थैंक यू, लाइक रियली रियली थैंक यू. Thank you. Thank you.